Hey guys, what's up and what's new? We are now in Dharamshala, Naddi area. We booked an Airbnb in Naddi, far from the hustle and bustle of the local hotels. It's from Naddi road and 500-meter inside this wonderful jungle trek. It's a little bit downside, a little bit isolated because it's named like that. Ekant Niwas is the name. It's Ekant in Hindi means isolated. So if you want to get away from the hustle and bustle of the city, you must come here and stay. There are 4 rooms with attic rooms itself. So there's a lot of space you can look up to, you can enjoy in, you can come with your friends, family and stay here. I won't suggest family because it's 500 मीटर का ट्रैक रूट. सो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो स्टोन चिप का रोड है, फिर नॉर्मल अच्छा भी रोड है, फिर से ख़राब होता है, तो उसमें थोड़ा तकलीफ़ होगा. तो इफ़ यू आर यंग देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू कम विथ योर फ्रेंड्स. जैसे हम लोग आए, फिर भी हम लोग को तकलीफ़ हुआ क्योंकि हम लोग रेगुलरली माउंटेन्स में चढ़ते नहीं हैं, तो सांस तो फूल ही जाता है. सो व्हाट वी हैव फॉर प्लान टुडे इज़ वी आर गोइंग टू सी द लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स and some unknown tourist spots of Dharamshala, which our caretaker for this Airbnb, Rajendra Bhaiya, is going to take us around, and we are going to travel in our traveler. So let's see what we see today. Let's go. तो गाइस कैसा लग रहा है? बहुत सही, बहुत सही. ओह, बहुत बढ़िया. कैसा है रूट? कैसा है रूट? बहुत हेक्टिक है लेकिन बहुत सही रूट है. इट इज़ वर्थ इट, टोटली वर्थ इट. एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया. आप अगर फेस बहुत खराब है. आप अगर इधर आ रहे हो तो मेक श्योर यू हैव गॉट द राइट शूज़ फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे आपका कच्चा पत्थर बोलते हैं जिसको, उससे रोड बनाया हुआ है. कभी कभी अच्छा है बट कभी कभी बहुत ही ख़राब रोड है, तो उसमें आप फिसल सकते हो, पैर में चोट लग सकती है. तो ये सब ख्याल रखना पड़ता है. हम लोग ने सब ने ट्रैकिंग शूज़ पहन रखा है. और अभी देखिए, अगर आप लोग को दिख रहा है मेरे पीछे व्यू, मतलब इतना लश ग्रीन जंगल के अंदर, माने इट्स लाइक मैं क्या बताऊँ, अ ड्रीम लैंड फ्रॉम अ फेरी टेल. तो ये है वही जन्नत. So guys, we are now at Aghanjhar Mahadev temple in Dharamshala, and यहाँ से जो हम लोग के भैया हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नागा साधु बैठते हैं. यहाँ पे एक हवन कुंड है जो हर समय जलता रहता है, तो देखते हैं वही यहाँ पे पूरा जो है. गाइस, मंदिर में आप अगर आओगे तो आपको एक हवन कुंड देखने को मिलेगा जो यहाँ पे हर समय जलता रहता है. उसको जलाते रहते हैं लोग, तो इट्स ऑलवेज ऑन. और यहाँ पे प्रसाद मिलता है जो आप ले सकते हो, टीका लगा सकते हो. और फिर नीचे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है एक वाटरफॉल के पास में. आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को अभी, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं. वहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर देखेंगे. देख के we'll continue. Let's go. तो गाइस, यहाँ पे क्या है, ये जो पत्थर देख रहे हो आप, उसके नीचे जाना पड़ता है. अंदर एक शिवलिंग है. तो सोचो आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया, तो आपको यहाँ पे आके अगर आप ये यहाँ से मांगो कि आपको नेगेटिव पावर से बचाने के लिए महादेव से बोलो कि आपकी रक्षा करे, तो ये है यहाँ पे काम करता है. तो देखते हैं हम लोग जाते हैं अंदर, कैसा लगता है. आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा मैं, बस बाहर से जाता हूँ. लेट्स गो.
तो गाइज हम लोग का सेकेंड स्पॉट फॉर द डे इज़ नोबलिंग मोनेस्ट्री, जो लास्ट स्पॉट से बहुत ही क्लोज़र बाय है टेम्पल से। तो आप लोग को दिखाते हैं, चलिए हम लोग पूछते हैं। I can tell you how peaceful it was inside this monastery. You could literally focus on the sound of the flowing water passing through the narrow canals which surrounds the monastery. मोनास्ट्री देखने के बाद पेट में चूहे कूद रहे थे, इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we ordered hot aloo parathas and satisfied the belly monster. तो गाइज हम लोग अभी हैं धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड पे, स्टेडियम पे, और हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं। टिकट है 30 रुपीज़ का, जो आपको वहाँ से काउंटर से मिल जाएगा। ग्राउंड को देखते हैं भाई, लेट्स गो। आप इसको विज़िट करना चाहते हो तो कीप इन माइंड आपको उधर लंच टाइम के पहले आना होगा, वरना बहुत भीड़ जम जाती है। On our caretaker bhaiya's special request, we came here at Kangra Art Museum, but sadly we weren't allowed to shoot inside. But हम भी चालू कैमरा ऑफ करके GoPro स्विच ऑन कर लिया। लो और पंगा। Closer to sunset, we came up from Mcleodganj to Dharamkot and started to hike down towards Bhagsunag temple. Sunset at Dharamkot is really pretty. While chilling and jamming with complete strangers at Bhagsunag, our day was coming to an end, but not completely. We still had one place to visit. We are now at Mcleodganj, the most popular spot at Dharamshala. We plan to roam around, do some shopping, have our dinner, and then call it a night and go back to our homestay. So guys, yes, this was all from this video. You saw how we spent our day at Dharamshala. If you guys liked this video, do give it a thumbs up. Also comment down how you felt after watching this video. Share this video, and also, most importantly, subscribe. Hit that subscribe button and beside that, the bell notification icon. So yes, this was it, and I'll be back soon with the final video from the Himachal Pradesh series. Stay tuned for it. Let's go. Bye bye.